Clock it. Going big on reels. Keeping up with the trend. आप भी तो GRWM वीडियो करके Instagram. 2. फ्रेंड्स The Bharatiya Janata Party has left no stones unturned to persuade the youth and pass the Gen Z vibe check. So much so that Prime Minister Narendra Modi's Independence Day speech almost completely remained youth-centric. All this after a youth-led mass movement in the national capital forced a key BJP minister to resign, followed by Gen Z and Gen Alpha protests erupting across the country. A generation going no caps, no filters, no political affiliations, just blunt, unapologetic demands for their basic rights and absolutely no sugarcoating. Adding to its new edition on the Gen Z outreach, the BJP has decided to replace its youngest MP, Tejasvi Surya, with a new face from Gujarat. Hemant Joshi has been appointed as the national president of BJP's Yuva Morcha. He may be a relatively young face in the BJP, often seen on speaking on youth-centric topics like the transgender bill. देखिए, अपोजिशन की एक बहुत ही बुरी आदत हो गई है कि कोई भी बात में किसी भी हित की बात हो या किसी समाज के हित की, उनके संरक्षण की भी बात हो तो विरोध ही करना है। यह बिल एक ऐसा था कि यूनानिमसली सबको इस बिल को सपोर्ट करके उनके हितों की रक्षा और एक संरक्षण के लिए आगे आना चाहिए था। उसमें अपोजिशन ने अपनी बात भी रखी और जब मतदान की बारी आई तब उन्होंने वॉकआउट करने का एक प्रयास किया। इसमें वो उनका जो पूरा स्टैंड है वो अपने ही स्टैंड में कंफ्यूज दिखे, परंतु आज सर्वानुमत से सभी के बहुमति से यह बिल आज पास हुआ है और इससे आगे जाकर भी जो केंद्र सरकार की ट्रांसजेंडर समुदाय के प्रति जो एक अच्छा इंटेंशन है उसको भी वो प्रतिपादित करता है। Joshi's Gujarat connect goes long back. Born on January 31, 1991 in Porbandar, Gujarat, Joshi belongs to the BJP's younger generation of lawmakers. His Vadodara chapter began in 2008 when his father moved to the city for his higher education in physiotherapy. Joshi joined the prestigious Maharaja Sayaji Rao University and remained closely associated with it until 2021. His tryst with civic governance began soon after. In January 2022, under then City BJP President Dr. Vijay Shah, Joshi was appointed Vice Chairman of the Vadodara Municipal Corporation School Committee, marking his first major step into public life. Joshi has also focused on taking political outreach digital. In Vadodara, he introduced a digital MP office along with an e-portal where people can book appointments, making it easier for constituents to connect with him. His digital outreach began gaining attention during his time as a youth leader in Gujarat, where he organized large-scale digital meetings and used technology for wider public engagement. His organizational work eventually caught the attention of senior BJP leaders, including Union Home Minister Amit Shah, and helped pave the way for his appointment as BJYM National President. Rather than just conventional boomer-style politics, Joshi is also known as a Rahul Gandhi baiter on social media, who follows a different kind of approach. Joshi connects with Gen Z through modern creative mediums, notably showing an active interest in organizing independent short film festivals. He has curated and led thematic youth film festivals such as events focused on Har Ghar Desi Ghar Swadeshi and patriotic historical themes, using visual storytelling to engage young creative minds rather than relying solely on traditional political rallies. Something that would easily bridge the gap between the BJP and the youth is education. With the latest protests and agitations, it was very clear that the youth does not easily get wooed with the religious reforms and developments, but is increasingly focused on jobs, opportunities, and growth. Joshi could be a wise choice for the BJP on that front.
a bachelor's degree in physiotherapy, and a master's degree in human resource management. Joshi's academic background gives him a profile that may feel more familiar and relatable to a younger generation. Recognizing his potential, the party included him as the sole MP from Gujarat in the delegation sent for Operation Sindoor in May 2025. ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत जो ग्लोबल आउटरीच मिशन चल रहा है उसमें संजय कुमार झा जी के नेतृत्व में हमारा डेलीगेशन आज तीसरे कंट्री पर पहुंचा है, सिंगापुर। और सिंगापुर के अंदर हमने यहाँ के जो सीनियर मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर हैं उनके साथ बैठक की, और साथ साथ इनका जो एमपीज़ का ग्रुप है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो चेयरमैन और सभी डेलीगेट्स हैं और कई सारे बिजनेस लीडर्स हैं, उनके साथ भी हमने चर्चा की। उसके बाद यहाँ के जो प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, और उनके कोलैबोरेशन में हमने कई सारे थिंक टैंक्स के साथ डायलॉग भी किया है, और किस प्रकार से इंडिया का स्टैंड, जो इंडिया एक पीस लविंग कंट्री है और इंडिया की प्रॉस्पेरिटी को डिरेल करने के लिए पाकिस्तान जो टेररिज्म का प्रॉक्सी वॉर चला रहा है उसको विथ प्रूफ्स हमने उनके सामने प्रेजेंट भी किया है। और जो भी हमारे पास उनके जो क्वेश्चंस थे, उनके जो कंसर्न्स थे, उसको लेकर भी हमने हमारा स्टैंड यहाँ पे डिक्लेयर भी किया है कि इंडिया इज़ अ पीस लविंग कंट्री एंड वी ऑलवेज एक्ट विथ रिस्ट्रेंट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट एनी एक्ट ऑफ टेरर विल बी कंसिडर्ड एज an act of war from Pakistan। एंड पाकिस्तान के अंदर जिस प्रकार से जो वर्ल्ड के जो फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका सपोर्ट लेकर कैसे वो टेररिज्म को भी स्पॉन्सर कर रहे हैं, और पाकिस्तान जो प्रॉक्सी वॉर कर इंडिया की इकोनॉमी को डिरेल कैसे किस प्रकार से कर रहा है, वो पूरी बात पर हमने विस्तृत चर्चा की है। He also came to the spotlight during Rahul Gandhi and BJP MP PC Sarangi's Lok Sabha controversy. Joshi was one among the complainants against the LOP, who filed a police report regarding the scuffle. Joshi had also represented India at BRICS 2024 and BRICS 2025 in Russia and Brazil. While the new BJP's youth face promises to give directions to the aspirations, dreams, and potential of India's young generation, the bigger question is, can he actually speak Gen Z's language, understand what they want, and turn those aspirations into action?